Fundamentals of climate, temperature anomaly. If horizontal distribution of air temperature goes with temperature inversion, then vertical pattern of temperature goes with the temperature anomaly. Temperature anomaly is also called negative lapse rate, because throughout troposphere, temperature tends to decrease with increasing height as we are increasing distance from the principal source. So do I need to consider temperature anomaly as something abnormal? I'll say no. Temperature anomaly is not abnormal, but it is a negative lapse rate, as in troposphere with increasing height, temperature starts increasing. Why it increases? There are the different mechanisms which leads to this. Some of the mechanisms are referred as static, as radiation that tends to generate on inversion. I label it as A. I also have got movement related mechanism as advectional, I can refer it as B, and convectional, I'll refer it as C. एडवेक्शनल के फिर आप दो कैटेगरीज डिमार्केट आउट कर सकते हो, एक विच इज रिलेटेड टू फ्रंटल मैकेनिज्म और एयर कन्वर्जेंस, और दूसरा विच इज रिलेटेड टू एयर ड्रेनेज. ये दोनों ही कैटेगरीज आपके आंसर में आनी चाहिए, नहीं आएगी तो आंसर इनकम्प्लीट माना जाएगा. सो व्हेन आई टेक रेफरेंस ऑफ ईच वन ऑफ देम, कुछ डिफाइंड मैकेनिज्म है, जरा फटाफट समझते हैं. व्हेन आई टॉक अबाउट द development of radiation, so this is my cold surface. Air is getting cold in the process of conduction. Air is poor conductor of heat, so this particular cold, I just take on a darker color, this particular cold air column will become dense and will subside, and it will have a warmer air column over it. Note very carefully that because air is poor conductor of heat, have you not generated temperature inversion? ये inversion किसकी वजह से हुआ? Without any movement. So when you are talking about negative lapse rate, you need to justify that kind of mechanism. Similarly, when I ask you to see the advectional movement, where advectional movement is combining air convection, so air convergence. When I talk about air convergence into consideration, cold and warm air column when converge with itself, warm tends to march up along the developed front, and automatically in this particular block you have developed temperature inversion. तो क्या हम inversion को एक एबनॉर्मल चीज कहते हैं? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है. ओनली थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज रिलेटेड टू नेगेटिव लैप्स रेट. इट इज नॉट डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग हाइट. अनदर एडवेक्शनल मूवमेंट इज रिलेटेड टू द टॉल माउंटेन्स विद डीप वैली. ध्यान से देखेंगे, ड्यूरिंग नाइट व्हेन देयर इज कैटाबेटिक विंड, because of the cold mountain wall and warm valley floor, air tends to get accumulated at valley floor, air drainage. अब ये accumulated air in the valley floor by next forenoon times becomes significantly cold, और direct sun rays किसको warm up कर देगी? स्लोप, एक्सपोज्ड स्लोप को. तो forenoon hours में आपने inversion डेवलप किया क्योंकि टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग हाइट, राइट? जैसे ही आफ्टरनून होगा, देन यू विल बी एक्सपीरियंसिंग व्हाट ऑल ऑफ अस नो, एनाबेटिक विंड्स. तो इसको इस तरह से रिलेट करेंगे. एनाबेटिक विंड इन्वर्जन से रिलेटेड नहीं है, एनाबेटिक विंड्स इन्वर्जन को डेसिपेट करने से रिलेटेड. एंड एडेड टू इट, व्हेन वी टॉक अबाउट टेम्परेचर इन्वर्जन, वी ऑल्सो कोरिलेट इट विद कन्वेक्शन. When warm surface tends to create process of conduction and thus rising air convection, it is subjected to adiabatic cooling. Adiabatic cooling is cooling of the air column without any subtraction of heat. It is only with the change in the volume of the air. ठीक है? Once it reaches its dew point temperature and condenses, condensation leads to release of latent heat,
and as I take the reference of release of latent heat, I'll be generating temperature inversion. एक और चीज बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि इन्वर्जन लिखते समय क्या हमें स्ट्रैटोस्फेरिक इन्वर्जन लिखना चाहिए? ऐड कर सकते हो अगर क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं, सिर्फ बोल रहा है टेम्परेचर इन्वर्जन, बिकॉज वेदर लेयर इज टिल ट्रोपोपॉज. तो अगर कुछ मेंशन आता है विच इज रिलेटेड समवेयर टू वेदर मैकेनिज्म तो मत लिखो. अगर सिंपली आ रहा है व्हाट इज टेम्परेचर इन्वर्जन, आइडेंटिफाई टाइप, so get on to stratospheric inversion. Stratosphere, ozonosphere. Ozone absorbs harmful ultraviolet rays, and that is the reason temperature definitely increases with increasing height. This is so simple, temperature inversion and its type. Bye bye from my side. Happy learning.